Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Al-Fattahil Alim. From Mentor English, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor MA Raza. Today, in short literary terms lecture, the topic is personification, tamathsul, tamthil, tamathil. A figure of speech where animals, ideas, or inorganic objects, characteristics. As one example of this is James Stephens' poem The Wind, in which wind performs several actions. In the poem, Stephens writes, "The wind stood up and gave a shout. He whistled on his two fingers." And also very important point of poem of William Davies, "You have no time to stand and stare on beauty's glance." That is also another example of personification. And of course pardon me, of course, the wind did not actually stand up, but this image of the wind creates a vivid picture of the wind's wild action. Another example of personification in the poem is kicked the withered leaves about and thumped the branches with his hand. Here the wind is kicking leaves about just like a person here. The wind is kicking leaves about just like a person would, and using hands to thumb branches like a person. By giving human characteristics to things, it makes these objects and their actions easier to visualize for a reader. In Urdu and Hindi, इसमें जानवर, ख्यालात, हदफ की खसूसियात बयान की जाती हैं. इसकी मिसाल जेम्स स्टेफ़न की नज़म है हवा. इसमें हवा मुख्तलिफ़ किरदार अदा करती है. मिसाल के तौर पर हवा सीधी खड़ी होती है और आवाज़ पैदा करती है. वो अपनी दो उंगलियों से सीटी बजाती है. हकीकत में हवा खड़ी नहीं होती, लेकिन इससे हवा का काम समझ में आता है कि वो कितने काम इंसानों की तरह सर अंजाम देती है. इसकी दूसरी मिसाल को देखिए. मुर्दा पत्तों को ठोकर लगाती है और अपने हाथों से पलटती है. यहाँ हवा पत्तों को ठोकर लगाती है जैसे एक इंसान लगाता है और टहनियों को तोड़ देती है अपनी ताकत से. या कंपोजिंग मिस्टेक है जी, कातब की गलती. अपनी ताकत से जैसे इंसान तोड़ते हैं, यानी हवा की और इंसान की एक खसूसियत बयान की गई है जो दोनों में मुश्तरक है. अगर आप जो है वो हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर ढूंढ रहे हैं, या आपका कोई साथी या दोस्त जो है वो उर्दू लिटरेचर की जो है ना वो तारीख़ या उर्दू लिंग्विस्टिक के हवाले से जो है ना वो परेशान है, तो उसे हमारे चैनल ऑफिशियल चैनल मुर्शद उर्दू प्रोफेसर MA रज़ा का तारफ़ करवा दीजिए. आपसे गुजारिश है, मेंटोर इंग्लिश और मेंटोर उर्दू दोनों को सब्सक्राइब कीजिए. बेल के आइकन कॉल पर प्रेस कीजिए. लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. हैव अ गुड डे.